instantaneous axis of rotation, IAOR. Suppose we have a circular disc or a sphere, anything which is circular. If it is undergoing pure rolling on a fixed surface, this is important. Yes. The condition is fixed rolling on pure surface. Now, in this, suppose if I take the highest point, let's call this as A. Yes. At this point, the velocity of point A will be omega r plus velocity of center of mass. Yes. If I take another point B, at this point, omega r is in this direction, BC is in this direction. So the velocity will be BC square plus omega r whole square under root, which is which is root 2 BC. This is twice BC. Yes. ठीक है? यदि मैं ये point लूँ C, so velocity of point C is 0. If I take another point D, which is center, velocity of D is equal to BC. Yes. Okay. Now, if I take this distance, C to B, Yes, sir. this is root 2R. Root 2R. If I take distance C to D, this is R. If I take distance A to C, this is 2R. Yes. Now see, we know that B is equal to omega R. ठीक है, मतलब यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में शायद आपने पढ़ा हो, if some particle of mass m is moving with velocity v and say there's a point O and this vector is r vector, so if we have to find out the angular velocity of this particle about point O, so what we do, we take the perpendicular velocity to r, Yes. or r which is perpendicular to b, either of the two things. Yes. Got it? तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस बिकम v sin थीटा. So v sin थीटा upon r, Yes, is the angular velocity about point O. इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर वेलोसिटी पता करते हैं. You will look here, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, BC इधर की तरफ होगा, ये 90 डिग्री है. So angular velocity about point C of point A, ठीक है, या ओमेगा ऑफ A about C जो होगा, that is C पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, 2BC upon 2R, BC upon root 2R. हाँ, इस सब का भी से बना रहेगा. पॉइंट D का ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC upon R. So मैंने 3 पॉइंट लेके प्रूव किया. आप कोई भी पॉइंट रैंडमली पिक करेंगे सरफेस पे and you will get BC upon R. So we say that the body is rotating about point C. Point C के about rotate कर रहा है ये, क्योंकि हर पॉइंट का किसी भी पॉइंट के about हम कहते हैं कि a body is rotating about this point. How do we say that? All the points of the body have the same omega about that point. यदि बॉडी का हर एक पॉइंट का ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है. Got it? So this body, ये जो यहाँ पे एग्जांपल में है, this is rotating about point C, but this is instantaneous axis. वो एक given instant पे रोटेट कर रहा है उस पॉइंट. हाँ, थोड़ा सा हिलेगा, फिर वो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन. This is something like कि यदि हमारे पास एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसे हम फोर्स लगाए और ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये इस तरह से एक पॉइंट के अबाउट रेस होगा, ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसके अबाउट ये रोटेट करना होगा. ठीक है, यदि नो स्लिपिंग हो रहा है, तो दिस इज रोटेटिंग, ये फिक्स्ड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा होगा फॉर एन इंस्टेंट.
ये तो काफी इंस्टेंट के लिए कर रहा होगा, वो तो बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना गुराशीष की इसका ओमेगा सेंटर के अबाउट है, इसका ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट भी सेम होगा। फाइन, सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. This will always be axis of rotation, but this is instantaneous axis of rotation. Any question? No. ठीक है, so this is the concept of instantaneous axis of rotation. कि for a body in pure rolling on a fixed surface, the contact point acts as the instantaneous axis of rotation. Since the contact point is instantaneous axis of rotation, मतलब पूरा body इस point के about rotate कर रहा है, so we can apply the rotational equation, that is torque is equal to moment of inertia about the contact point into alpha, torque about point P into IP alpha. Yes. About instantaneous axis of rotation. कहने का मतलब कि ये जो point है, suppose मैं इस पे एक force F लगा रहा हूँ, suppose there is a friction, Fs is the friction, this is in pure rolling. Fine, mg is like this, normal reaction is passing through center. आप क्या है, ये जो point P है, इस point के about आप torque निकालेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा compared to center of mass.